देखिए, हमने बैन भी कर दिया, गाइडलाइंस भी दे दिए कि इसको देना नहीं है, और कोई केमिस्ट शॉप अगर इसको रखेगा तो उस पर एक्शन भी होगा। Tamil Nadu government should hang its head in shame for not auditing that said company in Kanchipuram. For the last 4.5 years after DMK has come to power, the Tamil Nadu drug controllers have never entered the premise to inspect the quality standards of the said pharmaceutical company in Kanchipuram. Now, Chief Minister, after the Madhya Pradesh government has formed an SIT, after the police have come to Tamil Nadu, the Tamil Nadu Chief Minister conveniently suspended 2 drug controllers. When the suspension of 2 drug controllers by Tamil Nadu government is a prima facie evidence that Tamil Nadu government is at fault. यही चाहता हूँ वो कड़क से कड़ी सजा मिले और इनके घर पे भी बुलडोजर चले, इनकी कंपनी पे बुलडोजर चले, इनकी संपत्ति जितनी भी सब जब्त की जाए सरकार द्वारा। यही मैं मांग करना चाहूँगा।